Hi friends, so new version of intelligent wave clouds, that is the cloud system, is now available, version 4.0.1b, b as in beta. So this version can be applied by going to indicators, go to invite only script. If you have access to it, you can apply, you can select wave nodes IWC and it will show on chart something like this, the interface something like this by default. To go to the settings and change any settings, you can click this gear icon and you will see something new on your setting screen, which will be show critical levels. If this is not selected as show, you can click this and you will start seeing the critical zones and the levels. There are certain options which are available जिनको हम अभी quickly discuss करेंगे and we'll see what are the usages of this level, why these have been introduced, या इनको हम किस तरह से अपने ट्रेडिंग में समझ सकते हैं. The first thing that you will see within options is show reversal zones based on the last breakout. It means that these type of reversal zones, these will be visible to you based on the latest breakout. So say for example, अभी अगर price, when I say price or market, I'm referring to any chart that you are using this IWC module on. So अगर किसी भी टाइम पे ब्रेकआउट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस स्टेट. लेट अस से ब्रेकआउट लेटेस्ट हुआ बुलिश साइड का और उसके बाद मार्केट बैलेंस स्टेट में एंटर कर लेती है, तो हम लोग उस टाइम पे इन जोन्स को टर्न ऑन रखना चाहते हैं बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ब्रेकआउट, या हम चाहते हैं कि ये ऑफ हो जाए, जब नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा तभी ये विजिबल हो. ये ऑप्शन आपके पास अब अवेलेबल है. यू कैन टर्न इट ऑन और टर्न इट ऑफ बेस्ड ऑन your preference. Then there is something called internal level. We'll discuss the relevance of it. There are two types of internal levels. One is non-critical and other is the critical. इन दोनों के लिए कलर आप select कर सकते हैं. By default, critical internal levels will be marked red and non-critical levels will be marked with black color lines. Then अगर आप प्रेफर करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेड करने का, लेट अस से यू ट्रेड ओनली इन द लॉन्ग साइड एंड नॉट इन द शॉर्ट साइड, और मे बी यू आर बेरिश शॉर्ट साइड ट्रेडर, शॉर्ट सेलर्स हैं अगर आप, तो आप अपनी प्रेफरेंस से जो भी जोन अपीयर होंगे ब्रेकआउट पे, विच साइड जोन शुड अपीयर ऑन टाइप ऑफ ब्रेकआउट, यू कैन सेलेक्ट और डीसेलेक्ट दिस ऑप्शन टू टर्न दिस ऑन और ऑफ. लेट अस से अगर आप दोनों साइड पे ट्रेड करते हैं या फिर आप इनवर्स एन और एन पैटर्न को भी ट्रैक करते हैं, यू वांट टू सी एट एनी पॉइंट अगर किसी भी टाइम ब्रेकआउट हुआ है एंड द प्राइस इज एंटरिंग इनवर्स एन पैटर्न और एन पैटर्न, कहां तक वो विजिबल हो सकता है या कहां तक वो प्राइस जा सकता है, यू कैन टर्न दिस ऑप्शन ऑन एंड यू विल स्टार्ट सीइंग दोनों साइड के जो एप्लीकेबल जोन्स होंगे वो अब विजिबल हो जाएंगे आपको. बाय डिफॉल्ट दिस ऑप्शन इज टर्न्ड ऑफ, तो इसको ऑन करने के लिए यू विल हैव टू टिक मार्क दिस ऑप्शन. देन टेक्स्ट फॉर रिवर्सल जोन्स मींस द लेवल्स विच आर विजिबल ऑन द स्क्रीन वेदर दे शुड शो और नॉट. अगर आप सिर्फ जोन्स देखना चाहते हैं, यू कैन टर्न दिस ऑफ, दिस टेक्सचुअल information on the ranges by clicking off this ऑप्शन, टिक्ड ऑप्शन, इसको आप अनचेक कर दीजिए. दिस टेक्स्ट ऑप्शंस विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन, मींस दिस विल नॉट शो एट ऑल. देन लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू माइट वांट टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ इज द मार्क रिएक्टिव प्राइस एक्शन. व्हाट इज रिएक्टिव प्राइस एक्शन? व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट दैट हैपन्स, यूजुअली अगर देयर इज अ इनवर्स मूवमेंट एंड दैट इनवर्स मूवमेंट इज ओवर एक्सटेंडिंग, मतलब जब भी ब्रेकआउट होता है, अगर लेट अस से रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत हैवी या क्वांटिटी के साथ दे आर गोइंग लॉन्ग, इन दैट केस देयर माइट बी अ रिवर्स रिएक्शन दैट मे हैपन एंड दिस रिवर्स रिएक्शन कैन कम अप टू पर्टिकुलर लेवल. अगर ये उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे निकलता है या कोई ब्रेकआउट होता नजर आता है विच इज लाइकली टू बिकम a bigger trap in coming times, in that case this is called reactive price action. That is HFT algos are reacting to the positions in the market and they are just unnecessarily extending downward move to beyond certain level, and that will be visible to you if this option is turned on. So you can be careful while trading. Then you can extend zones on left and right side. If you do not want to extend it, you can turn it off. You want to extend it on left side, you can turn
this, select this option. You want to see it on the right side only, you can select this option. Alternatively, you can select both the sides so that you can track the kind of price action that has happened after the breakout has happened. So अगर ये settings आपकी complete हो जाती हैं, be careful, इस setting में एक option जो है वो हटा लिया गया है, वो है reverse जो target zones होते थे, reversal zones प्रीवियस जो रिवर्सल ऑर्थोडॉक्स स्टाइल रिवर्सल जोन्स होते थे उनको हटा दिया गया है. These have been replaced by the new reversal zones which are now visible on the screen in the latest version. And this reversal zone comes with the purpose, comes with very good piece of information that can help you plan your trades really well. Usually these reversal zones are called reversal zones because these are the price points or the price ranges from where it is expected कि cool down होगा. मतलब जब भी breakout होता है, एक upward bullish action देखने को मिलता है, या अगर downward side का breakout होता है या bearish action देखने को मिलता है, there is always a cool off period. मतलब एक प्राइस में अच्छा मूवमेंट आने के बाद एक करेक्शन आती है. अगर बुलिश साइड का ब्रेकआउट था और अगर बेरिश साइड का ब्रेकआउट था तो कुछ रिकवरी होती है. ये रिकवरी कहां से स्टार्ट होगी या कूल डाउन कहां से एक्सपेक्टेड स्टार्ट होगा, ये रेंजेस अगर हमें पता चल जाए, वी कैन मैक्सिमाइज आवर आरओआई बेसिस दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. रिमेंबर ऑलवेज, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो हेजिंग इज ऑलवेज मैंडेटरी. दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन्स. रिमेंबर, दीज आर नॉट द, we will not say that these are the only zones where reversal happen. Reversal may happen based on certain other pieces of information like any change in macroeconomic policies or event or news or something like that. Maybe pressure on the market, some reactive action that may happen. So but if the conditions are normal, there are no changes to the conditions, in that case once these zones are reached, we expect that there will be some type of cool down that will happen. So if you enter the trade on bullish breakout, these are the zones where you need to really manage your trades and you need to check for another breakout. Means अगर ये zone 1 जैसे फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, अगर फर्स्ट जोन के ऊपर का ब्रेकआउट फिर से हो रहा है, देन द लोअर पार्ट ऑफ दिस जोन बिकम्स योर स्टॉप पॉइंट एंड अबव दिस देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रिवर्सल दैट कैन हैपन इन द सेकंड जोन. आउट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जोन, रिमेंबर सेकंड जोन इज द क्रिटिकल मोस्ट. मतलब ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखता है फॉर रिवर्सल टू हैपन. अगर सेकंड जोन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है जैसे यहाँ हो रहा है, देन इन दैट केस वी डू नॉट टेक मच रिस्क, क्योंकि ये एक स्लो एंड काइंड ऑफ मैनेज्ड मूव अपसाइड का बनता है, जहां पे अब रिवर्सल जो एक्सपेक्टेड है वो थर्ड जोन से एक्सपेक्टेड होगा. और अगर थर्ड जोन के ऊपर की तरफ चल रहा है, देन वी प्रेफर नॉट टू ट्रेड एट ऑल, because as per price flow theory, dynamic wave theory की अगर हम बात करें, then market cannot move beyond or cannot sustain for very long beyond the breakout points for very long duration. That's why when we say these are reversal zones, यहाँ से अगर हम first, second, third zone देखें, then the sustenance of the price at this level becomes very tough for the market. That's the reason अगर breakout हुआ है, आपने ट्रेड लिया, some positions get managed here, you readjust, you go for the second one. लेकिन अगर second का breakout हो रहा है, we lower the exposure, we do not take bigger risk, we stay hedged, we rather go ahead with smaller quantities. And if third zone is achieved or touched already, in that case we move out of the trade. We do not pick or prefer any bullish side trade here. Can we pick reversal trades here, contra trades here? See, if the price action is happening, you can switch to the lower time frames. You can go to other time frames to check if any downward movement is happening. Usually जो ट्रेड्स होते हैं ब्रेकआउट के बाद में, कॉन्ट्रा ट्रेड्स प्रेफर नहीं किए जाते, क्योंकि ऐसे केस में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बिकॉज इफ द इंस्ट्रूमेंट इज हाईली वॉलेटाइल, से फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे, अगर थर्ड क्लाउड का ब्रेकआउट होता है, देन देयर कैन बी रियली गुड मोमेंटम दैट में बिल्ड अप इन द coming time as well, especially on the lower time frame. There can be a good momentum build up as well. That's why contra trades are not recommended. Rather, it is suggested that you validate pieces of information by going or switching to different time frame here. So if you are direction trader and you know that this is happening, then you can plan your trades really well. Sometimes you will see that many instruments, any kind of breakout is followed by in N pattern, or if it's bearish trade, then in that case it is followed by inverse N pattern. Now since N pattern not necessarily has to be like this, it can become like this type of pattern,
inverse and can be like this type of pattern. So how to know up to what point these type of previous points or the ranges up to which point this may extend. If you are using wave hope point as the stop point, it is an option with you that you can turn it off. If you are using internal levels, you can turn on and turn off internal levels by selecting this option. So if you are not using wave hope point, it's totally okay. But if you are using wave hope point, then definitely this becomes important for you to track any kind of reversal with the help of wave hope point that we have discussed in other videos. But here, if we are using internal levels, in that case we have to keep a watch on two critical levels which are marked with the red color lines, that any bounce it's expected to happen from here either, or it is likely to happen from here. So if it is getting broken, we let it continue downward side. So if there is price bounce that is happening from here and crossing above this range, this becomes the stop, and we can assume that the bounce has already happened. However, if this line also is getting broken, in that case we wait for the second critical level to get achieved, and then once this level get achieved, it starts moving up. The line above this one becomes the entry point for us, can become the entry point for us, and this becomes the stop point. If you are picking any kind of bounce here, your stop is placed here. If you are picking any entry here, your stop becomes immediate. जो भी लेवल नीचे की तरफ रहेगी लाइन, वो आपका एक स्टॉप पॉइंट की तरह सर्व करता है. Remember, we do not re-enter and exit the trades repeatedly. Usually these type of levels are helpful when you are trading in point to point trading. That is, market अगर बैलेंस स्टेट में है और बैलेंस स्टेट में अगर आप पॉइंट टू पॉइंट ट्रेडिंग करते हैं तो ये लेवल्स काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं. तो इसको आप इंटरनल लेवल्स को प्लॉट कर सकते हैं फॉर P2P, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट ट्रेडिंग. ऑल्टरनेटिवली टू मैनेज योर रिस्क, यू कैन लोअर द रिस्क इफ दिस इज क्रॉसिंग बिलो. बट ये मैक्सिमम इनवर्स एन और एन कहाँ तक अलाउड होता है? यूजुअली ये अलाउड होता है प्रीवियस जो भी एक बेरिश जोन आपको नजर आ रहा है, यहां तक ये अलाउड होता है. रिमेंबर, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हियर दैट देयर शुड नॉट बी एनी क्लाउड ब्रेकआउट ऑफ बेरिश साइड. दैट इज रेड कलर का क्लाउड का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए. एनी टाइप ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट हैपनिंग, दिस बिकम्स द क्रिटिकल जोन्स फॉर एनी काइंड ऑफ बाउंस. सो once this is done, you can start planning your trades really well. However, there might be some scenarios जहां पे आपको दिखेगा that these zones are not kind of not providing very good piece of information to you. Usually whenever the price is managed for अगेंस्ट द प्राइस फ्लो, या फिर हम कहें डायनामिक वेव थ्योरी के अगेंस्ट में जब प्राइस मूवमेंट हो रही होती है, दैट टाइम यू विल सी दैट दिस जोन्स विल स्क्वीज, द इंटरनल लेवल्स विल स्क्वीज, द जोन्स विल स्क्वीज. दैट मीन्स दैट प्राइस इज नॉट conducive for any kind of trade. Say for example here on 5-minute time frame, usually for point to point trading or for parallel clouds like this, there should have been these internal levels should have been plotted somewhere here, but since these have moved down, it means the market is bullish, but this is not the conducive price action or price flow to trade with. So at this moment you should rather wait for some time and let these zones replot themselves, and then you should think of entering the trade, because in such type of scenario there is a very high probability of getting trapped. Yeah, there is a high probability of not getting benefited from any kind of trade. That's why these ranges will start squeezing. So these are not the flaws. You can check whenever these are squeezed and these are not ranging from cloud to cloud. In that case you can understand that the current move of the market or price flow of the market is not as per dynamic wave theory, and we should avoid trading these type of scenarios. We should rather look for some different time frame, or we should look for some different instrument to trade. So say here we want to trade, but at this time frame it shows that the conditions are not conducive, so you can switch to different time frame, like 3-minute. If I switch, I can see okay, the things are looking pretty fine here. Now here market is in balanced state, then why we see these type of zones? You can manage these zones from here. So if you do not want to zones to remain plotted when there is balanced state of the market, in that case you can just simply turn this off and it will show you only the internal level. You can also turn off internal level if you want in such type of scenario. However, if you prefer कि मुझे रेंज का पता होना चाहिए based on latest breakout, जैसे इसमें latest breakout अप साइड का था, that even though
price is in balanced state, but there is a highly likely possibility that if price is surviving about above critical level like this and this, in that case it might continue to move upward direction. Then in that case, where it will face the resistance or where it will likely to get the reversal, जहां से इसको रिवर्सल मिलना स्टार्ट होगा, वो कौन सी रेंज होगी, you can continue to let it plot on the screen. At times, if you are not going ahead with any kind of inverse and pattern tracking, you can just simply turn off this option, which is both sides fibs. Here you can turn this option off and you will see the zones where the latest breakout had happened. So what happens is, if you turn that option off, it means you will also know where latest breakout had happened, so you will know which side trade I should prefer. When I'm entering the trade, which side it should be preferred, किस side risk लिया जा सकता है, किस side risk नहीं लिया जा सकता. At times, जब मूवमेंट आती है, ब्रेकआउट होता है, एंड देर इज इनवर्स रिएक्शन दैट इज सीन इन द मार्केट, दोस गेट मार्क्ड विद समथिंग लाइक दिस रिएक्टिव प्राइस एक्शन, especially like bearish cloud breakout. Usually conditions are that any bullish cloud breakout which is down and bearish cloud is up, downward side breakout is happening, this is likely to become a trap. Irrespective ये कितना नीचे की तरफ जाएगा, there is a high probability that this is a reactive trade, and after the reaction is successful, that is रिटेल इन्वेस्टर्स या जो मार्केट प्रेशर बिल्टअप हुआ है वो जब रिलीज हो जाएगा, उस केस में मार्केट वापस अपसाइड पे जाना स्टार्ट कर देगी. सो इस टाइप के ब्रेकआउट में हम लोग फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं. इनसे बचने के लिए जरूरी होता है दैट वी कीप अ वॉच दैट वेदर दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन इज रिएक्टिव और नॉट, एंड वेदर वी शुड वेट फॉर बैलेंस स्टेट टू री एंटर द प्राइस और नॉट. You can use this option as well to manage your trades really well, and you can avoid getting trapped or entering unnecessary trades by just simply tracking reactive price action. So I think new features are pretty good for planning the trades really well, whether you are futures trader, derivative trader, option trader, or equity trader. You trade in commodity, you trade in Bitcoin or any other cryptocurrency, you trade in forex, you trade in cash segment. I think these features are definitely gonna help if you start practicing them and start understanding the benefit of trading with these type of level. Like say for example, here I'm seeing that Nifty has currently, today as of date when I'm plotting it, I see that Nifty has already moved to third zone on 30 minutes time frame. So the bigger, the long term trades have to be closed here, because from here also if any kind of breakout is happening, probably this is the condition जहाँ पे हम लोगों को trade avoid करने चाहिए. So we should now wait for new type of breakouts to happen if we are long term trader or swing trader, new clouds and new zones to appear, so that we can start planning our trades really well. So these type of pieces of information help you plan your trades really good. Leverage all these facilities, leverage all these features, and see the change in your trading patterns and trading style. थोड़ा आपके लिए easy भी हो जाएगा, relax भी हो जाएगा, because you would know that when the breakouts are happening for the zones, you know that where the stops are and where you need to really manage your trades. Otherwise these kind of leaps, usually when it appears, it continue to create a lot of ट्रबल फॉर द ट्रेडर्स. तो आप इस टाइप के लीप्स के अननेसेसरी इफेक्ट से भी बच सकते हैं. और अगर इस टाइप के लीप्स को भी अगर आप हैंडल करना चाहते हैं, यू कैन इवन प्रेफर टू गो टू लोअर टाइम फ्रेम्स एंड देन यू कैन चेक व्हाट्स हैपनिंग and you can plan your trades accordingly. Thank you so much for watching this video. God bless you all. Please take care. Start practicing. Start using this. Thank you once again.